An experiment to verify the principle of moments, right? So let's say you have here a ruler, you hang the ruler with a support. Let's say you use a string, right? And the ruler is hung like this. There's a support here. And let's say you have a string which is going like this. And this is the weight W1. You have another weight here. I'll call this W2. Let's say that this is D1. Let's say this distance is D2, right? So first of all, what you're going to do is you will hang the weights and balance the rule. You will balance the rule all the way. And you record the distances D1 and D2 from the meter rule. Record the distances D1, D2 from the meter rule. Okay, what you're going to do is you will move the weights W1 and W2 to the other positions. ठीक है, अब आप W दोबारा से बैलेंस करने करेंगे. पहले तो आपने W1 D1 W2 D2 से एक मतलब मैं इसको मैं D2 कह देता हूँ, इसको मैं D1 कह देता हूँ. What do we call this experiment? Like Experiment to verify the principle of movements. so is there no like a name of like law or something, right? This verifies the principle of movements. So what you're going to do is you will move the weights which are W1 and W2 to the other positions and record The distance, like D1 and D2, are they supposed to be like the same distance from the pivot? No, they are not going to be the same. They can vary according to the weights, but the product is going to be the same. W1 D1 must be equal to W2 D2. But if the distance is different, wouldn't it affect on the length and then on the weight of it? Maybe it would disturb the equilibrium. नहीं, अगर इसका weight 50 है और इसका distance 5 है, ठीक है, तब भी आंसर 250 आ रहा है. और दूसरे का weight आपके पास 125 है और distance 2 है, तब भी आंसर 250 आ रहा है. Okay, thank you. You repeat this for several times. Then what you're going to do is you will calculate W1 D1. समझ आ रही है ना? And Yes, sir. W2 D2, to show that they are numerically equal. तो अब आप टेबल बनाएंगे और किस तरह का टेबल बनाएंगे? टेबल में आप क्या करेंगे? सर हर डिस्टेंस के लिए हर वेट मेजर करेंगे, हर मोमेंटम मेजर करेंगे. हाँ, बाकी क्या कहते हैं? What do you think? First of all, you I will. would like to say the same, as we can, find principal moments by that table. So you will have a table like this, and you will have something of this sort. This is the serial number. We have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. We have D1 slash meter. We have D2 slash meter. We have W1 slash Newton. We have W2 slash Newton. We have, देखिए ये हमारे पास इस तरह से आता जा रहा है और अगला आएगा हमारे पास W1 D1 slash Newton meter. आपने यूनिट साथ जरूर लिखना है. जो क्लॉकवाइज मोमेंट्स होते हैं वो एंटाई क्लॉकवाइज मोमेंट्स की इक्वल होते हैं, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स. तो W1 D1 will be equal to W2 D2. तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट है यहाँ पे और ये एंटाई क्लॉकवाइज मोमेंट है. ये आपको इस तरह से टेबल बनाने के लिए वो कह सकता है, राइट? ठीक है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज है? इट इज अ पॉइंट वेयर the entire weight of the object appears to act for any orientation of that object. Where the entire weight of the object appears to act for any orientation of that object, right? ठीक है. For example, मेरे पास ये एक रूलर है और मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट जगह से फोर्सेस लग रही हैं, राइट? ऑल द वे फ्रॉम हियर हियर एंड हियर. तो क्या लिखा है? फॉर एनी ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट.
यस, फॉर एनी ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। एक ऐसी फोर्स होगी जो रिजल्टेंट होगी इन सब फोर्सेस की, और जिस पॉइंट से वो फोर्स पास कर रही है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक ऐसी लाइन होगी जहां से पूरे सिस्टम का वेट पास कर रहा हो, ये होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग एवरीवन? द एंटायर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट appears to act for any orientation of the object. अच्छा, you can balance the ruler at this point, but if you have something like this, ये आपके पास ये एक पॉइंट है और ये वेट यहाँ पे एक्ट कर रहा है, लेट्स से इसका यूनिफॉर्मिटी के साथ, या आपके पास वेट यहाँ एक्ट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा, टी। और ये यहाँ पे बैलेंस नहीं होगा रूल, ये मोमेंट आप खुद चेक कर लें, आप साइड पे उसे बैलेंस करें रूलर को, मतलब आप कोशिश करेंगे बैलेंस करने के तो वो बैलेंस ही रहेगा, वो मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे बैलेंस करना चाहें तो ये बैलेंस हो जाता है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पिवट से पास कर रहा है और कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, बाकी हर तरफ से मोमेंट्स बैलेंस्ड है। यहाँ पे मोमेंट बैलेंस नहीं हुआ, यहाँ पे आपके पास एक क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो गया, राइट। Center of gravity for a regular object is at the center. For a uniform object is at its center of the body, acts through its center of gravity. The weight of the body acts through its center of gravity, right? Just a minute. The weight of the body acts through its center of gravity, right? Okay? The weight of the body acts through its center of gravity. And you should know that for a regular and uniform object, center of gravity lies at the geometrical center. For example, a sphere, you should know that the center of gravity lies in the middle. A rectangle, the center of gravity lies precisely in the middle. ये डंबल है, डंबल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो यहाँ पे होगा मिडिल में। इसका रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मिडिल में होगा। अब रिंग एयर, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एयर में होगा, क्योंकि आप इसको यहाँ पे बैलेंस नहीं कर सकते, यहाँ पे बैलेंस नहीं कर सकते, तो ये डायरेक्टली सेंटर में आता है, सेंटर में बिल्कुल होता है यूनिफॉर्मिटी के साथ। हाउ टू डिटरमिन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन लैमिना, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसका ए लेवल के अंदर प्रैक्टिकल्स भी आ जाते हैं और ओ लेवल के अंदर एटीपी के अंदर भी आ जाता है, राइट, और ओ लेवल P2 के अंदर भी आया होगा, ये आपको आना चाहिए, राइट, ऑफ अ प्लेन लैमिना। A lamina is what? It's an irregular shape. To determine the center of gravity of a plane lamina, it's an irregular shape. It's a non-uniform thickness, object of thickness, right? Non-uniform thicknesses की और non-uniform thickness और density, I would say. Right here, non-uniform thickness और density, right? अच्छा, इसके लिए apparatus क्या चाहिए? आपको एक तो चाहिए retort stand. आप when we have a plumb line, we have a cork. मुझे क्या लिखा रिटॉर्ट Plumb line is we have the retort stand here. मैं इसका पहले साइड व्यू दिखा देता हूँ आपको, ये साइड व्यू है और इट इज लाइक दिस। अच्छा, यहाँ पे पेंडुलम लगी हुई है, प्लम लाइन, दिस इज द प्लम लाइन, ये साइड व्यू है, दिस इज द साइड व्यू एंड यू हैव हियर द, देखिए ये साइड पे लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। This is the side view, right? We have here like this. This is the retort stand. And this here is what? This here is the front view that you can see, right? Like this, we have, this is a plumb lamina, right? And the plumb line is acting here. The pendulum is here, right? Like this. इसी तरह से आप इसको, ये एंटायर स्ट्रिंग प्लम लाइन है, ये चीज प्लम लाइन है, ये पेंडुलम नहीं होती, इसे प्लम लाइन कहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, किसी तरह से आपने 3 डिफरेंट होल्स करने हैं उस पे, और सर कहीं भी आपने, जी कहीं भी लगा सकते हैं ये होल्स? नहीं, ये एज फार अपार्ट एज पॉसिबल होंगे और ये फ्री टू मूव होना चाहिए। ये जो लैमिना है इट शुड बी फ्री टू मूव अबाउट। कॉर्क यूज करें आप, पिन यूज करें यहाँ पे, और ये यहाँ पे कॉर्क लगेगा और पिन होगी, तो ये फ्री टू मूव। तो आप यहाँ पे एक होल लगा लेंगे, इस तरह से आ जाए।
फिर आप इस पॉइंट पे इसको लगाएंगे और इस तरह से लाइन बना लेंगे इस पे, जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे और लाइन बना लेंगे, जहां पे ये तीनों इंटरसेक्ट करेंगे ना, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इसका। आप इसको यहाँ पे लगाएंगे, फिर इस ये होल नंबर 1 आपने किया, ये होल नंबर 2 किया, ये होल नंबर 3 किया। जैसे आपने 1 के लिए किया था इसी तरह से आप 2 के लिए भी करेंगे और 3 के लिए भी करेंगे, ठीक है। सो व्हाट यू गोना डू इज, समझ आइए सबको ये, आई एम गोना राइट इट एवरीवन। जी सर। इसका फायदा ये है कि आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल रहा है, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लैमिना। इसका फायदा ये है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट जो प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम में होगा। ये तीनों पॉइंट यहाँ पे मीट कर गए। मेक 3 होल्स near the edge of the lamina. The holes should be as far apart as possible from one another. They should be as far apart as possible, right? You will suspend the lamina to one of the holes using a pin. Hang, so you suspend the lamina through one of the holes using a pin. Hang a plumb line on the pin. You hang the plumb line on the pin in front of the lamina. ठीक है. Number 4, when the plumb line is steady, draw a line on the lamina over the plumb line. When the plumb line is steady, you draw a line on the lamina over the plumb line, right? ठीक है, आप उसके ऊपर लाइन लगा लेंगे, देखें जैसे मैंने यहाँ पे लाइन लगाई थी, ठीक है। Everyone, are you getting what I'm saying? All of you? जी सर। ठीक है, repeat for the other 2 holes. And number 6, the point of intersection of these 3 lines is the position of center of gravity. So this is the experiment that you should know. These are the points that you should know. That you make 3 holes near the edge of the lamina, as far apart as possible, and make sure not much of the lamina is removed, right? ठीक है? Precautions ये ले सकते हैं that holes must be small so that not too much lamina is removed. Let me write here the precautions for this experiment that you're going to write here is that the holes must be small so that not too much of lamina is removed. Number 1. Number 2, the lamina should be free to swing about its equilibrium position, its point of suspension. ठीक है, तो ये अपने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से मूव कर सकेगा, ठीक है, लेफ्ट टू। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज स्टेबिलिटी. is the ability of the position object to regain its original position if it has been tilted slightly. मतलब आप, ठीक है, आप एक कप को साइड से पुश करें और वापस अपनी जगह पे आ जाए तो वो स्टेबल है. Stability refers, I'm right here, to the ability of an object to regain its original position after it has been tilted slightly. Okay, it will come back to its original position. If you have something which does not come back to its original position, that is not stable. तो जैसे आपके पास ये एक कोन थी, ये इसका वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा था, ये इसका रिएक्शन है from the surface. Okay, this is placed on the table. If you tilt it slightly so that if its center of gravity lies within the weight, the base, right? If its center of gravity lies within the base, it will fall. This is the weight. Now this is the pivot. और यहाँ पे भी रिएक्शन आ रहा है. और देखिए ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा. आप उसे पुश करेंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा. आ जाएगा. वो देखिए ना, वो गिर के वापस आ जाएगा. उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस के अंदर ही लाई कर रहा है. वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा. It will come back. Okay, sir. ठीक है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है. अगर आपके पास, समझ आइए ये बात, अगर आपके पास एक फॉर Yes. एग्जांपल एक बस हो, दिस इज अ बस,
और बस जो है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहे हैं उसकी बेस के अंदर, तो अभी ये इक्विलिब्रियम में है, राइट। लेकिन जो ही आप इसको टिल्ट इस तरह से करवाएंगे कि इसका वेट उसके बेस से बाहर निकल जाएगा, तो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, राइट। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बेस के अंदर लाई करना चाहिए। अगर मैं इसको टिल्ट करूं तो ये बस गिर जाएगी। ये देखें, ये बेस एरिया से बाहर हो गया। अब क्या होगा, ये बस गिर जाएगी, मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ये पिवट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास एक कोन है और आपने उसको इन्वर्टेड बैलेंस किया हुआ है लाइक दिस, ये इसका वेट है। अगर आप इसको टिल्ट करते हैं तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर निकल जाएगा इसकी बेस से और इट विल फॉल, नॉट स्टेबल एनीमोर, राइट। हाउ कैन यू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट? what is the method? Do you remember? सर How एक can तो you? सरफेस एरिया बढ़ाना उसका कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया, और दूसरा के सेंटर ऑफ ग्रेविटी इट शुड बी क्लोजर टुवर्ड्स द सरफेस. Okay, the stability of an object can be increased by the center of सर gravity. SP1 का होगा। The center of gravity should be as low as possible. आपने देखा होगा जो रेसिंग कार्स होती हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत नीचे होता है, तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। नंबर 2, फ्लावर वाजेस होते हैं, उनको भी कोशिश करते हैं वो नीचे की तरफ वो उसको ज्यादा एरिया कवर करें, राइट। एंड नंबर 2, द एरिया, ये दोनों पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। द एरिया ऑफ द बेस शुड बी as wide as possible. तो आपके पास this is a flower vase. You see that the base area is wider. Similarly, you have a Bunsen flame. This is a Bunsen flame here. You see that the base area is wider to make it more stable. वरना ये गिर जाएगा। इसी तरह से आपने लैम्प देखे होंगे। लैम्प्स जो हैं वो भी उनकी बेस बहुत ज्यादा बड़ी होती है, कि अगर बेस बड़ी नहीं होगी तो वो जो है वो लैम्प गिर जाएंगे। This is to make them more stable.